Greetings everyone, welcome to your own channel Adarsh Mishra Genius Labs. We are doing PYQs on a topic chemical kinetics and nuclear reactivity. So basically we call it chemical kinetics, right? Let's start with questions. So you can see question number 1 on your screen. An element ZMA undergoes alpha emission followed by 2 successive beta emission. The compound element formed is which one? Alpha is 2He4, beta is -1E0. So when you say alpha emission followed by 2 beta emission, can we say there will be drop of 2 unit in the atomic number, right? And then what will be the increase in this number because of beta emissions, right? So we can understand that beta emission will improve it. So what's the final answer? When एक alpha निकला और 2 beta निकला, so 1 alpha corresponding to that loss of 2 beta increase of 2, so number remains same. और ऊपर आपको 4 का डिक्रीज मिलेगा बिकॉज अल्फा इज 2He4. सो जो न्यू एलिमेंट बना उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? सेम एज द प्रीवियस Z, बिकॉज Z -2 +1 इज Z, एंड द टॉप mass number is reduced by 4, so answer will be A-4. So which option we are going to mark for this? We can say A-4. See one more question. The rate of chemical change is directly proportional to, इसका आंसर क्या होगा? बेसिकली किसी भी रिएक्शन का रेट किस चीज के प्रमोशन होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू द पावर ऑर्डर, और वी कैन से प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट एट दैट टाइम. एक्टिव मास इज मोलर concentration which you write. Let's see the next question. The number of neutrons in the parent molecule which gives 7 and 14 on beta emission will be. So कौन सा एलिमेंट है जो 7 and 14 साथ में दे रहा है, राइट? बीटा एमिशन के आंसर है 6E14. कार्बन 14 अगर आप लेते हो तो ये बनाएगा 7 and 14 -1 is 0, 2 पार्टिकल्स निकल के आएंगे. Question 4. The hydrolysis of ethyl acetate in which medium is which order reaction? Ethyl acetate का फॉर्मूला देख लीजिए. It's an ester, C2H5. Okay. So CH3CO C2H5 आप पूरा फॉर्मूला लिखते हो. एस्टर को हाइड्रोलाइज करने जाओगे H+ की प्रेजेंस में. इट्स अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बिकॉज इसकी डिपेंडेंसी किस चीज पे नहीं होती है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+. That's used as catalytic amount. So it's a first order reaction. Acidic condition में, basic condition में करोगे सेम काम तो ये हो जाएगी आपकी second order reaction. Question number 5. A radioactive nucleus decay emitting 1 alpha and 2 beta particles. The daughter nucleus is what of the parent? Z will be same. अभी आपने क्वेश्चन किया थोड़ी देर पहले, इसका Z सेम था. अगर Z सेम है तो ये आइसोटोप होगा, right? So it's an isotope. That's why the answer is isotope for the given case. Any difficulty in this, any issues on this? I hope you're liking these videos. Keep subscribing, sharing with your friends also. Thank you.